हेलो गाइस। तो आज का बायोलॉजी का चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं मेंशन नहीं किया कौन सा क्वेश्चन कौन सा एग्ज़ाम में आया है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, ऑप्शन दिया हुआ है गैसियस एक्सचेंज एंड फूड ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी ट्रांसपायरेशन। तो lenticels are involved in gaseous exchange. Option A is correct. Next question is evaporation process or transpiration process. Evaporation process occurs in root, entire body of the plant, leaf, stem. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इवापोरेशन प्रोसेस occurs in leaf. तो इवापोरेशन जो होता है ये लीव्स के थ्रू, लीव्स का जो टाइनी पोर्स होता है इसके थ्रू होता है इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो इसको बोला जाता है स्टोमेटा भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Krebs cycles takes place in endoplasmic reticula, mitochondria, dictyosomes and chloroplast. Option B is correct. Krebs cycle takes place in mitochondria, जहाँ मतलब एनर्जी जनरेट्स होता है थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA और ATP। इसके मतलब इसके थ्रू एनर्जी जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the presence of which enzyme does condensation of acetyl CoA with oxaloacetic acid in the first step of the Krebs cycle? ऑप्शन ए दिया हुआ है एकोनिटेज, सक्सिनाइल थियोकाइनेज, फ्यूमारेज एंड सिट्रेट सिंथेटेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिट्रेट सिंथेटेज। तो क्या बोला है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल CoA विथ ऑक्सैलिक एसिड। तो इन द क्रेब्स साइकिल, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्रेब्स साइकिल कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Glycolysis is part of, ऑप्शन दिया हुआ है Krebs cycle, aerobic respiration only, anaerobic respiration, both aerobic and anaerobic respiration। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। Glycolysis is part of both aerobic and anaerobic respiration। Next question is respiratory quotient of linseed is 1, 0.64। तो ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। तो बोला है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर लिंसीड इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is respiratory substrate in photorespiration? Carbohydrate, fat, protein, glycolate। Option D is correct, glycolate। Which of the following is respiratory substrate in photorespiration? Option D is correct, glycolate। Next question is respiratory quotient of anaerobic respiration is infinity, 0, greater than 1 or 1। तो रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑप्शन ए इन्फिनिटी और इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, जो टोटल वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an inclusion? ऑप्शन दिया हुआ है गैस्ट्रिकोस इन बैक्टीरिया, साइनोफायसिन ग्रेनुअल्स, बेकोस इन प्लांट्स एंड फॉस्फेट ग्रेनुअल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेकोस इन प्लांट सेल्स। which of the following is not an inclusion? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेकोस इन प्लांट्स। तो बेकोल जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है एंड ये स्टोर करता है वाटर सेप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। सो दैट्स वाई दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स।
क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉट एन इंक्लूजन बोला है। तो बेक्वेल जो है, बेक्वेल्स इन प्लांट्स, बेक्वेल जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है एंड ये स्टोर करता है वाटर सेप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। तो ये सब जो स्टोर करता है ये सब यूजफुल नहीं है सेल के लिए, सो that's why you cannot called inclusive bodies. Option C is correct. Next question is, which of the following statement is incorrect about photorespiration? Incorrect about photorespiration. तो ऑप्शन दिया हुआ है, फोटोरेस्पिरेशन occurs in C3 plants. The first compound formed during C4 pathway is oxalic acid, oxaloacetic acid. Option C, C3 plants have Krebs anatomy, and option D, C4 plants lack photorespiration. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, C3 plants have Krebs anatomy. तो Krebs anatomy जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 plants, नॉट C3 plants. तो बोला है which of the following statement is about photorespiration. तो Krebs anatomy जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है C4 plant का, नॉट C3 plant का. तो C3 plant do not have Krebs anatomy. Next question is, impure air is purified in the presence of light. Impure air is purified in the presence of light, and green plants was first said by D. Cicero and Presley, Ben Helmont and Ingenhousz. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रेस्टली. Impure air is purified in the presence of light, and green plants was first said by Presley. Next question is, roots can take oxygen when it is gaseous form, solution with water, chemical combination with other compounds. Option D, liquid form. So option A is correct. Roots can take oxygen when it is in gaseous form. Next question is, electron transport system. Electron transport system in mitochondria is located in outer membrane, intercrystal space, inner membrane space. So option C is correct, inner membrane. Electron transport system in mitochondria is located in option C is correct, inner membrane. Next question is, slow respiring plants were plant tissues are primary stems, cambium, leaf, primordium, and young plant. Option D, adult plants and matured tissues. Option D is correct. Slow respiring plants or plant tissues are adult plants and matured tissues. Next question is, the ATP is formed in adenosine triphosphate is formed in Golgi body, ribosomes, nucleus, mitochondria. So ATP, the adenosine triphosphate is formed in mitochondria. Option D is correct. तो mitochondria को power house of the cell बोला जाता है, power house of the eukaryotic cell. Mitochondria को power house of the eukaryotic cell बोला जाता है. Next question 16. Where are many of the enzymes that take part in the Krebs cycle located? Where are the many of the enzymes that take part in the Krebs cycle located? Option A दिया हुआ है, mitochondrial fluid, protoplasm, inner membrane mitochondria. Option D, plasma membrane. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो where are the many enzymes that take part in Krebs cycle? ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो बहुत सारा एंजाइम है जो Krebs cycle का, तो ये लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, या माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड को ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय ऑप्शन ए by molecular oxygen, by molecular hydrogen, by molecular CO2, by NADPH2. इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट. In the electron transport mechanism, the last electron is accepted by option A is correct, by molecular oxygen. Next question is, what is the process called by which the rate of, what is the process called? तो बोला है process called
by which the rate of aerobic respiration is inhibited by the atmospheric O2. Rate of aerobic respiration is inhibited by the atmospheric O2. ऑप्शन दिया हुआ है. अच्छा, रेट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज इनहिबिटेड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पस्ट्योर इफेक्ट, केल्विन इफेक्ट, डार्विन इफेक्ट, नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पस्ट्योर इफेक्ट. द प्रोसेस बाय व्हिच द रेट ऑफ एरोबिक respiration is inhibited by atmospheric O2 is known as Pasteur effect. Next question is oxygen. Oxygen is released during photosynthesis. Option दिया हुआ है from H2O2, from H2O, from CO2, from CO3. So during photosynthesis, oxygen is released. Option B is correct, H2O. इसका अगर रिएक्शन बनाए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 प्लस H2O तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा C6H12 H12O6 प्लस H2O. ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनाए C6H12O6 H2O. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which product of glycolysis is used in alcoholic fermentation? Which product of glycolysis is used in alcoholic fermentation? NADH ATP, ATP, NADH CO2. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. NADH glycolysis is used in alcoholic fermentation. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो alcoholic fermentation ये uses the NADH product in glycolysis. Next question is, in which of the following does the respiration take place even in the absence of oxygen? अच्छा, in which of the following does the respiration take place even in the absence of oxygen? ऑप्शन दिया हुआ है मैंगो, जिंजर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस. तो बोथ जो दिया हुआ है ऑप्शन मैंगो एंड जिंजर, यह क्या बोला है? डाज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इवन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोला है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यह जो मैंगो एंड जिंजर दिया हुआ है ये ऑक्सीजन रिक्वायर होता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस. तो मैंगो एंड जिंजर ये undergo through aerobic respiration and they require oxygen. Next question is, how many ATP molecules are produced by the complete oxidation? One molecule of acetyl coenzyme A, 12 ATP, 15, 19, 38. Option A is correct, 12 ATP. 12 ATP molecules are produced by the complete oxidation of one molecule of acetyl coenzyme A. Next question is, which of the following is responsible for nitrogen fixation in the soil? Virus, fungus, bacteria, protozoa. Option C is correct, bacteria. Which of the following is responsible for nitrogen fixation in the soil? Bacteria. तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस. तो एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस इसका सीरीज दिया हुआ है. तो ऑप्शन दिया हुआ है फॉस्फोफिनॉल, पायरोबिक एसिड टू पायरोबिक एसिड. ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रक्टोज 6-phosphate. Fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate. Option B is correct. Next question is, how many CO2 molecules are formed? How many CO2 molecules are formed from a single turn of Krebs cycle? Option A 6, 4, 1, 2. Option D is correct. How many CO2 molecules are formed from a single turn of Krebs cycle? Option D is correct, 2. Next question is,
all enzymes of TCA are located in the mitochondrial matrix except one, which is located in the inner mitochondrial membranes in eukaryotes. And in cytosol, in prokaryotes, this enzyme is succinate dehydrogenase, lactate dehydrogenase, isocitrate, and malate dehydrogenase. So option A is correct, succinate dehydrogenase. All enzymes of TCA are located in the mitochondrial matrix except one. तो except one बोला है तो option A is correct, which is located inner mitochondrial membrane in eukaryotes. Succinate dehydrogenase जो है ये inner mitochondrial membranes in eukaryotes में located है, and in cytosol in prokaryotes this enzyme is succinate dehydrogenase. Next question is chance of photorespiration. Chance of photorespiration is highest in which of the following photosynthetic pathways? Chance of photorespiration is highest in which of the following photosynthetic pathways? Option A is CAM, C4, C3, all of the above. So option C is correct. Chance of photorespiration is highest in C3, photosynthetic pathways. Next question is, in which step of Krebs cycle FAD is reduced into FADH2? तो कौन सा स्टेप्स ऑफ Krebs साइकिल में FAD रिड्यूस होकर FADH2 हो जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड. इन Krebs cycle, succinic acid converted to malic acid. Next question is the 29. The net energy yield from aerobic respiration in eukaryotic cell is 10, 30, 36, 38 ATP. The net energy yield from aerobic respiration in eukaryotic cell is option C is correct, 36 ATP. Next question is, during plant respiration, glucose is completely oxidized using X molecules of O2 and X molecules of CO2 are evolved. The respiration quotient is 1, 0.7, 0.9 equal to X. So option A is correct, 1. So during plant respiration, glucose is completely oxidized X molecules of O2 and X molecules are evolved. The respiration quotient is 1. Option A is correct. Next question is, one molecule of NADH yields how many molecules of ATP? So one molecule of NADH yields how many molecule of ATP? Option A is correct, 3 ATP. Next question is, respiratory quotient of which of the following is infinite? Carbohydrate, fat, anaerobic respiration, aerobic respiration. Option C is correct. Respiratory quotient for which of the following infinite? Anaerobic respiration. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो सिंपल आप लोग समझ सकते हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, सो देयर इज़ नो ऑक्सीजन कंजम्पशन. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन. Next question is, the breakdown of glucose to pyruvic acid is involved in. Question 34. The breakdown of glucose to pyruvic acid is involved in electron transport system, glycolysis, oxidative decarboxylation, oxidative phosphorylation. Option B is correct. Breakdown of glucose to pyruvic acid is involved in glycolysis. तो ग्लाइकोलाइसिस ये एक प्रोसेस है where glucose is broke down into pyruvic acid and रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है फ्रॉम ATP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which cycle operates in photorespiration? Krebs cycle, Kelvin cycle, glycolate cycle, H-Slack cycle. Option C is correct. Glycolate cycle operates in photorespiration. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये था टोटल 35 क्वेश्चन
इस चैप्टर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं।